everyone, this is CAJAIN. Welcome back to my channel. Today I'm going to discuss about the treatment of subscription in the chapter non-profit organization. Actually many students have a doubt that ma'am सब कुछ याद रहता है NPO में, but जो treatment होता है items of similar nature like subscription, insurance, ये सब का treatment याद नहीं रहता कि कब क्या करना है. So I came up with this tips and tricks which will help you to remember what treatment to be done when you solve your questions. I really hope this video will be helpful to you. So let's get started. First of all, we need to understand what is subscription. Subscription is a major source of income for non-profit organization. These are the amount which we receive from the members. So इसका बहुत सा treatment हो सकता है, like subscription beginning में outstanding हो सकता है, outstanding at the end हो सकता है, advance at the beginning हो सकता है, advance at the end हो सकता है. It can be of anything. So any kind of adjustment can come in your exam and accordingly you need to treat them. So first of all, we understand what are the treatments which we do. As we receive this money, it appears on the debit side of receipts and payments account. That is, we are receiving that money, that cash or in bank. Debit side of receipts and payments account में आपको show करना पड़ता है subscription amount which we received during the year, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो next year का हो, चाहे वो current year का हो. All the amounts pertaining to any year will come in receipts and payments accounts as it is received during that year. So subscription last year, this year or next year, any year will come in receipts and payments account. Next treatment is in income and expenditure, where we write all the amounts pertaining to only and only current year, present year. ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें जो भी करंट ईयर के से रिलेटेड अमाउंट होगा वो ही आपको पोस्ट करना है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में क्रेडिट साइड, ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट. एंड द थर्ड ट्रीटमेंट इज इन बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, एज इट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन एसेट. ओके, हमें मिलना है तो वो एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की तरह दिखाया जाएगा. और सब्सक्रिप्शन विच वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही ले लिया है, अभी तक वो एक्रू नहीं हुआ, दैट इज़ इट हैज़ नॉट बीन एक्रूड टिल नाउ, उसको हम लोग को लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है. वी नीड टू शो इट इन लाइबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, सो इन दिस 3 प्लेसेस वी नीड टू पोस्ट सब्सक्रिप्शन अमाउंट. सो किस टाइप के ट्रीटमेंट्स एडजस्टमेंट्स आते हैं क्वेश्चन में, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट कम इन योर एग्जाम. सो इफ इट इज़ पर्टेनिंग टू करंट ईयर से रिलेटेड देयर विल बी आउटस्टैंडिंग और देयर विल बी एडवांस. प्रीवियस ईयर, पिछले साल से रिलेटेड भी देयर विल बी आउटस्टैंडिंग एंड देयर विल बी एडवांस. ओके, सो बेसिकली 2 टाइप्स, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हो गया कि अगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ दे दिया तो एडवांस एट द एंड आ गया basically. Okay, so we need to understand this 4 adjustments. In the adjustment part, okay, writing language matters a lot. So if it is written subscription for the year, that means that subscription amount is related to current year. And if we write subscription received during the year, throughout the year, it can be pertaining to previous year or current year or next year. Okay, so always read the line properly in your exam. If it is subscription received during the year, then there will be another treatment. If it is subscription received for the year, there will be different treatment. So this adjustments, how you can remember, if anything is outstanding at the end, okay, at the end मतलब pertains to current year, इसी साल का है, which we could not pay but we need to accrue क्योंकि ये है तो रिलेटेड टू दिस ईयर ओनली एंड यू नीड टू एड इट बैक. सिंपल. सपोज इट इज़ आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब इट परटेन्स टू लास्ट ईयर, बट हमने करेंट ईयर में पे किया. ओके, लास्ट ईयर का था. हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो पहले का प्रीवियस आउटस्टैंडिंग होगा वही तो पहले लेंगे ना सब्सक्रिप्शन मेम्बर्स से. सो जो पहले का था वो हमने इस बार रिसीव किया, उसको हम लोग को लेस करना पड़ेगा. नाउ इफ़ एनीथिंग देयर इज एडवांस एट द बिगनिंग में एडवांस मतलब इस साल के लिए मेंबर्स ने पहले ही पैसे दे दिए, दे पेड बिफोर ओनली, सो इट परटेन्स टू करेंट ईयर बट वॉज पेड लास्ट ईयर बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसने सोचा कि मैं दे देता हूँ. सो यू नीड टू एड इट बैक. नाउ एडवांस एट द एंड मतलब दिस एडवांस amount is for the next year, he has extra money, he has paid more. Okay, so it pertains to current year, paid in current year, he had surplus which you need to subtract less.
So I'll just give you an example of how to treat them. Okay, this will go with any kind of item which is of similar nature in NPO. So calculate the amount of subscription for income and expenditure. For example, suppose in your question it is given 31st March 2020, 31st March 2021. If it is given outstanding at the beginning, at the end, advance at the beginning, at the end, and subscription received. Subscription received during the year. During the year matlab it can be pertaining to current year, previous year, next year. Okay, 20,000. And in the subsection B will treat for सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, मतलब ओनली करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आया है आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में. सो इन दैट केस सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन विल बी सब्सक्रिप्शन विच वी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, ड्यूरिंग द ईयर है लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. जैसे कि मैंने बोला आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मतलब दिस आउटस्टैंडिंग वॉज पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर. ओके, विच is outstanding till date and we have paid it in this year. Okay, तो ये किससे रिलेटेड हुआ? लास्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग लेस करेंगे. एडवांस एट द बिगनिंग मतलब दिस आइटम वॉज पर्टेनिंग टू करेंट ईयर, जो हमने पहले ही रिसीव कर लिया था, एक्रू ही नहीं हुआ और हमने पहले रिसीव कर लिया था, बट इट पर्टेन्स टू करेंट ईयर. करेंट ईयर मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड. Now if there is advance at the end, matlab that is not related to current year but it pertains to next year, matlab in this income and expenditure will it come? No, so we will subtract it, less it. And if there is any outstanding at the end, matlab it pertains to current year, isi baar aana tha, aaya nahi, mila nahi. Okay, this is an asset to the company, so we need to add it back. Okay, so ये करके आपको आपका फिगर मिल जाएगा जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है. नाउ इन सबसेक्शन बी यू हैव रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. ओके, फॉर द ईयर. फॉर द ईयर अगर आपने 20,000 रिसीव किया तो इसमें क्या होगा? दिस पर्टेन्स ओनली टू करेंट ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू करेंट ईयर वी हैव रिसीव दिस मच. नाउ what is outstanding which should have been received in the current year will only be added back, 2,500. If anything we have received in advance for the next year, it is not included in this item already. Anything which is related to last year, that is also not included in this item, in this figure. So what is not included is the outstanding at the end which pertains to current year, that you need to add it back. So in this way you will get the figure of subscription amount which you need to post in income and expenditure account. So basically in this way you need to think about whether it pertains to the current year or not, and accordingly you need to add or subtract, and this you can use with any kind of adjustment entries. So with this I really hope all the adjustments related to subscription or any item which is of similar nature is clear to all of you. If you found this video helpful, please like it, share it with your friends and subscribe to my channel if you haven't till now. Thank you so much.